6/7 सीटर एसयूवी की ओर देखेंगे तो मार्केट है भरपूर। एक तरफ है अल्काजार तो दूसरी तरफ है XUV 700। सफारी तो अब आ चुकी है किया कैरेंस। ले क्या, कोई देता है पेट्रोल तो कोई देता है दमदार डीजल। किसी में है भरपूर फीचर्स तो किसी में है ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन। तो चलिए आपका प्रॉब्लम आज सॉल्व करने के लिए हम ले आए हैं मिस्टर अमिताभ जी को, जो एक Hyundai Alcazar ओनर है। पेट्रोल टॉप ट्रिम है उनके पास, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं और वो अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करेंगे। वेलकम टू आवर शो सर। आपके पास ऑब्वियसली सिग्नेचर ट्रिम है Alcazar का। कितने की पड़ी ऑन रोड आपको? मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 23.5। 23.5। तो इस पे आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है? That time only 3 years warranty option was there. Okay. इस टाइम पे गाड़ी मुझे ऑफर करी गई थी। The only option was 3 years warranty, not more than that. So I have opted for that option. और 23 लाख आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, because I think you have accessorized the car. Not really. I have not really accessorized anything in the car, but I have taken the insurance and everything from the dealer itself. अच्छा. So those things does make a little bit of impact in terms of and you know some amount of impact because of you ask for a specific number plate and all that stuff. अच्छा. तो सर आपने कितना चला लिया अब तक ये गाड़ी? So far I have already done 10,500 kilometers. 10,500 किलोमीटर पिछले 6-7 महीने। पिछले 6-7 महीने, correct. I got this car in end of July. End of July, तो मतलब आप अर्ली कस्टमर्स के गिनती में आते हो? Very initial. I mean, I think I would be one of the first 3,000-4,000 customers of Alcazar when it was delivered. अच्छा, तो सर इसमें एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो ऑब्वियसली एलेंट्रा और 200 जैसी गाड़ियों में भी दिया गया है। तो रिस्पांस कैसा है? सिटी ड्राइविंग में कैसा लगता है? I normally drive in eco comfort zone. I'm not except unless and I'm on a hills. I generally drive on eco comfort zone and response has been pretty good. I mean, if you're looking for a racing car, this is not something I'm going to talk about. But if you're a daily driving enthusiast and a practical commuting, this is a wonderful car. I have driven in very extensive traffic conditions also for hours together, and I have not found anything which is discomforting. और हाईवे पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? Oh, great. I mean, it's a flip. I have driven all the way up to from Delhi to Kolhapur. जो लगभग 1600-1700 किलोमीटर। Correct. Then I have driven back via MP. So while going, I went via Rajasthan, Gujarat and Mumbai via Pune to Kolhapur, and then on return I was back from MP via MP and Gwalior and all. And most of the time they were good roads. Even if they were not good roads, I have had no discomfort. I mean, I've driven even at a younger age when I was driving very extensively. I would not have driven more than 450 kilometers in a day and feeling tired. But this car I drove 10 hours straight from Jaipur to Ahmedabad, and we had 2 stops on the way, and it was wonderful ride. Absolutely no tiredness. हाईवे की राइड को तो सर दाग दे रहे हैं, बट सिटी में आते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 3-row SUV है, लंबी है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इजी टू ड्राइव है? क्या आप सजेस्ट करेंगे? मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं थी। मैं नॉर्मली कॉम्पैक्ट SUV को प्रेफर करता था इससे पहले। लाइक आई वाज ड्राइविंग Yeti इन द पास्ट, और मेरा इंटरेस्ट भी इसी तरह की नॉट रियली अ बिग SUV वाज माय इंटरेस्ट एरिया, बट मैं ये कह सकता हूँ कि देयर इज नो रिग्रेट। मुझे बम्पर टू बम्पर ड्राइव में भी, मेरी डॉटर भी जो कि बहुत नई ड्राइवर है, इन्होंने भी इस गाड़ी को काफ़ी एक्सटेंसिवली मेरे साथ ड्राइव करा है, और हम दोनों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। ऑफ कोर्स इनिशियल 1 or 2 ड्राइव्स यू गेट टू गेट द फील ऑफ द कार, बट वंस यू हैव द फील ऑफ द कार, I don't recall any discomfort anyway. तो सर आते हैं माइलेज में 10,000 किलोमीटर चला चुके हो, सिटी हाईवे ऑन एवरेज कितना निकाल के देती है 2 लीटर का इंजन? So my kind of a drive, I am not a very pushy driver. So in city, even in a normal city, Delhi conditions and Noida conditions, I normally get 10 to 12 kilometers a liter. And on a highway, I get anything between 14 to 16 easily. If I am in a racing mode, it does impact the mileage a lot.
but otherwise, normally there's a kind of mileage I can give. So I can easily say that I would put my bet on say 12 kilometers a liter, combined average of this car. 3 फुल साइज एसयूवी 12 से 14 का औसत निकाल के देती है, ऐसा कुछ नंबर्स अमिताभ सर को मिल रहा है। तो सर पहले मतलब आप ऑब्वियसली मार्केट में जब 20 लाख से ऊपर खर्च करने गए थे, ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। एल्काजार एक 3 रो एसयूवी होने के नाते कंपटीशन के तौर पे आपको सफारी या हिक्टर प्लस जैसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। जब आपने इस गाड़ी को खरीदा तो डिड यू कंसीडर दोस कार्स? I did. Safari was a good option, but Safari doesn't have any petrol engine. I was keen on an environmental friendly car, at least better option. So electric cars were ruled out because of the infrastructure issues. So the other option was petrol cars. So Safari was ruled out because it doesn't have the petrol option. Safari or Harrier. MG Hector was one of the cars which was there in my mind, but I didn't hear a good response reports about their average that we were getting with such a big car. So fuel mileage was something that was putting me off, and personally, you know, though it's a British brand, but now owned by Chinese company. Okay, So I do have reservations about that. बिल्कुल। सर वहीं अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो छोटी कई सारी गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जांपल टाइगून, कुशाक, डस्टर भी काफ़ी हद तक इनमें टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, चलाने में मज़ेदार रहते हैं। तो आपने उन गाड़ियों को कंसिडर किया, उन गाड़ियों की तरफ देखा आपने? So look, so my requirement was very clear that I was looking for a petrol car, good ground clearance and petrol ground clearance, 6 airbags and some additional safety features. So if you look at that options, many of the cars are already ruled out. You end up having maybe Kia and Creta, Kicks and Dusters are ruled out because don't have the required safety features. Kia was something that is comparatively new in India, and they are as good as Hyundai, so they are sister concerns. And they do not have the option of the 7-seater. Now they have. Karen has come in, but that time they didn't have. So when I looked at the overall features, panoramic sunview, roof, sitting comfort, 360-degree camera, 6 airbags, traction control, hill assistance, wireless charging. So another thing that personally I wasn't very comfortable about DCT. Okay. Dual clutch transmission is something that is a wonderful clutch system, but transmission system, but has its own maintenance issues. I have not heard great stories when it goes wrong. So that's where another reason that Alcazar, being a simple torque converter and a very smooth one, was a natural choice. तो सर आपको तो सेफ्टी चाहिए था, सेफ्टी इस गाड़ी में आपको भरपूर मिली है, बट इसमें 3 रोज दिए गए हैं, आपने कैप्टन सीट वाला वेरिएंट चूज किया है। तो फैमिली के लिहाज से ये गाड़ी कैसी है? क्या वो कंफर्टेबली सेकंड रो, थर्ड रो में बैठ पाते हैं? So पहली चीज़, नाउ आज के तारीख में 7-सीटर ऑप्शन है सिग्नेचर ट्रिम में। जब मैंने गाड़ी ली थी तब 7-सीटर ऑप्शन नहीं था ऑटोमेटिक में और सिग्नेचर ट्रिम में। तो अगर उस टाइम होता तो शायद एक बार थॉट होता दिमाग में कि आप बेंच सीट लेते कैप्टन। हाँ, लेकिन फ्रैंकली फैमिली जिनको इस गाड़ी में ट्रेवल करना था उनका ज़्यादा कंफर्ट कैप्टन सीट में था, बिकॉज हम लोग इंक्लूडिंग में अगर हम लोग 4 लोग हैं, मोस्टली इस गाड़ी में 4 लोग ट्रेवल करते हैं, तो अच्छा आपको स्टोरेज मिल जाता है कंसिडरिंग आपने थर्ड रो यूज़ नहीं करा। और जहाँ पर भी हमने थर्ड रो यूज़ करा है लॉन्ग डिस्टेंस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट इंडिविजुअल ने एक्सप्रेस नहीं करा, बिकॉज यू कीप टेकिंग ब्रेक्स, यू कीप एक्सचेंजिंग सीट्स, so that way it is not aircraft space which you get in the third row, but it is decent space because second row is adjustable, so you accommodate the third row very easily as and when you need to really do that. बिल्कुल सर। सर 3 फीचर्स, स्टैंड आउट फीचर्स जो एज एन Alcazar ओनर आप यू आर प्राउड ऑफ। Oh, a sunroof, my 360 degrees, and the navigation system. Fourth I would add is music. I really love the way they have gone about providing. My family loves loud music. I don't really enjoy it so loud when I'm driving, but the features of you can adjust your speakers of the speaker center volumes in a way that becomes comfortable for everyone. Absolutely fantastic. बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं इस गाड़ी में। Absolutely. तो सर फाइनल क्वेश्चन में आते हैं।
इतना आपने चला लिया है, आपके एक्सपीरियंस में थैंक यू। वुड यू सजेस्ट Alcazar टू अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट 20 लाख के ऊपर? क्या Alcazar एक सही पसंद हो सकती है? I would definitely recommend that. I won't. The kind of experience I had with the dealership, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट इतने लंबे ड्राइव पर जब गया हूँ तो बिना अपॉइंटमेंट मैं डीलरशिप पे गया हूँ फॉर देयर असिस्टेंस, कभी क्लीनिंग कराने के लिए, कभी व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए, एंड दे वर कम्प्लीटली डीप इनटू अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, बट I got fantastic service every time I reached out to them. So one is aspect of investment with them, other is the aspect of getting the right service. I would definitely say that it's been a no regret buy from any perspective. So for you, it's a thumbs up for Hyundai Alcazar. Absolutely. And anyone who can, of course, people will think that why to invest another 3 lakh for a additional one seat, which you can get 5-seater in a smaller car. But I had similar input coming from people in the past when they said that why are you buying a Yeti when you can get a better car, maybe a XUV 500 at that point of time, the same rate. But my take is that it's a comfort. I mean, it's not something that you invest for 2-3 years. If you invest for a longer period of time, these things are really important to be taken into consideration. From me, it's a definite thumbs up. And as I said that, my daughter being a new driver, I was really worried that will it be too difficult for her to drive a big car, but the way she has been able to manage, it's been easy because this car really drives like a car. I mean, this big SUV comparatively still drives just like any other sedan, because she drove Sunny, which I at least for some time, and it's as good as driving Sunny too. Exactly. बड़ी गाड़ी है बट सिटी में कॉम्पैक्टनेस जिसे हम कहते हैं, ईज ऑफ ड्राइवेबिलिटी, उसके मामले में Alcazar अच्छा स्कोर करती है। तो ये तो थे अमिताभ जी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अगर आपको कोई कहानी हमें बतानी है, दर्शकों तक पहुंचानी है, तो ज़रूर कमेंट बताइए या डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you very much.